श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. मंडळी, जीवनातील प्रत्येक क्षण हा स्वामींच्या इच्छेनुसार घडतो. त्यामुळे दुःख आणि सुख यांना समान समजून स्वामींच्या चरणी अढळ श्रद्धा ठेवा, कारण स्वामी तुम्हाला नेहमीच योग्य मार्ग दाखवतील. स्वामी समर्थ सांगतात की तुमच्या हृदयात भक्ती असेल तर जगातील कोणतीही वाईट शक्ती तुमचं नुकसान करू शकत नाही. त्यामुळे अडथळ्यांना आव्हान द्या आणि परमेश्वराच्या आशीर्वादाने पुढे जा. जोपर्यंत भक्तांच्या मनात अहंकार आहे तोपर्यंत तो स्वामी समर्थांच्या अनंत कृपेचा अधिकारी होऊ शकत नाही, कारण विनम्रता आणि समर्पण हाच भक्तीचा सर्वश्रेष्ठ मार्ग आहे. स्वामी समर्थांच्या भक्तांना कधीही काळजी करण्याची गरज नाही, कारण जेव्हा भक्त संकटात असतात तेव्हा स्वामी भक्तांच्या पुढे जाऊन त्यांच्या अडचणी स्वतः दूर करतात. जेव्हा आयुष्यात काही उरत नाही तेव्हा स्वामी समर्थांची भक्ती करणारा भक्त कधीही रिकामी हाती राहत नाही, कारण स्वामींचे नाव घेतल्यानेच सर्व गोष्टी आपोआप त्याच्या पायाशी येतात. स्वामी समर्थ भक्तांना सांगतात की तुमच्या मनात जर अढळ श्रद्धा असेल तर आकाशही तुमच्यासाठी वाकेल आणि ज्या गोष्टी तुमच्या जीवनात कधीच घडणार नाही असं तुम्हाला वाटत होतं त्या गोष्टीसुद्धा तुमच्या जीवनात घडण्यास सुरुवात होईल. स्वामींचे नाव घेतल्याशिवाय कोणतंही कार्य पूर्णत्वास जात नाही, कारण स्वामींचे स्मरण म्हणजे जीवनातील सर्वोच्च विजय आणि प्रत्येक संकटावर मिळालेले यश आहे. स्वामी समर्थ महाराज सांगतात की संकट ही केवळ तुमच्या श्रद्धेची कसोटी आहे. त्यांच्यासमोर कधीच हार मानू नका, कारण भक्ताच्या मनातील श्रद्धेचे सामर्थ्य हे कोणत्याही संकटापेक्षा मोठं असतं. परमेश्वराने तुमच्यासाठी आधीच योग्य वेळ ठरवलेली आहे, त्यामुळे घाई करू नका. फक्त श्रद्धा ठेवा आणि स्वामी समर्थांच्या मार्गदर्शनाने योग्य क्षणाची वाट बघा. स्वामींच्या चरणी समर्पित झालेल्या भक्ताला कोणाचाही द्वेष करायची गरज नाही, कारण जिथे स्वामी समर्थ असतात तिथे द्वेष, लोभ आणि अहंकार कधीच टिकत नाही. स्वामी समर्थांचे भक्त कधीही मागे वळून पाहत नाहीत, कारण त्यांच्या श्रद्धेच्या बळावर स्वामींचे आशीर्वाद त्यांना नेहमी पुढे नेऊन विजय मिळवून देतात. स्वामी समर्थांची भक्ती म्हणजे केवळ नामस्मरण नव्हे, तर ती एक ऊर्जा आहे जी जीवनातील प्रत्येक अंधाराला प्रकाशात बदलते आणि भक्ताच्या मार्गातील प्रत्येक अडथळा दूर करते. स्वामी समर्थ महाराज सांगतात की तुमच्या हृदयातील शुद्धता हीच खरी भक्ती आहे. त्यामुळे इतरांशी नेहमी प्रेमाने वागा आणि कोणाचेही वाईट करू नका. स्वामी समर्थांचे स्मरण करून जेव्हा भक्त नतमस्तक होतो तेव्हा त्याच्या जीवनातील प्रत्येक दुःख आपोआप नाहीसं होतं, कारण त्याला स्वामींच्या कृपेचा अनमोल आशीर्वाद मिळतो. स्वामी समर्थ सांगतात तुमच्या कर्मावर श्रद्धा ठेवा आणि फळाची गोड अपेक्षा सोडा, कारण योग्य वेळ आली की परमेश्वर स्वतः तुमच्या जीवनात आनंद आणि समाधानाचा वर्षाव करतील. स्वामी समर्थांचे नाव जिथे घेतलं जातं तिथे कोणत्याही वाईट गोष्टीचा प्रभाव राहू शकत नाही, कारण स्वामींचे स्मरण हे भक्तांच्या संरक्षणाचं सर्वोत्तम कवच आहे. स्वामी समर्थ महाराज सांगतात तुमचं जीवन हे फक्त स्वतःसाठी नाही तर इतरांसाठी सुद्धा आहे. त्यामुळे नेहमी निस्वार्थ सेवा करा आणि परमेश्वराच्या चरणी शरण जाऊन आनंद अनुभवा. स्वामी समर्थांच्या भक्तीमध्ये अशी ताकद आहे की जिथे जग थांबतं तिथे भक्तीचा आत्मविश्वास सुरू होतो आणि परमेश्वर त्याला विजयाच्या मार्गावर पुढे घेऊन जातात. जो भक्त प्रत्येक क्षणी स्वामी समर्थांच्या चरणी समर्पित होतो त्याच्या जीवनात सुख, शांतता आणि आनंदाचा प्रवाह कधीही थांबत नाही, कारण स्वामी समर्थ त्याच्या प्रत्येक पावलावर असतात, त्याच्यासोबत असतात. स्वामी समर्थ भक्तांना नेहमी सांगतात की जीवनातील प्रत्येक संधीला एक आशीर्वाद समजा, कारण तुम्हाला दिलेली प्रत्येक संधी ही परमेश्वराने तुम्हाला दिलेला सुवर्ण योग असतो. स्वामी सांगतात की कधीही भीती बाळगू नका, कारण जोपर्यंत भक्ताच्या हृदयात श्रद्धा आहे तोपर्यंत परमेश्वर त्यांचे रक्षण करण्यासाठी सदैव तयार आहेत. स्वामी समर्थांच्या कृपेने भक्ताच्या जीवनात काळोखाचा एकही क्षण टिकत नाही, कारण स्वामींची भक्ती ही खऱ्या प्रकाशाचा अनुभव देणारी दिव्य ऊर्जा आहे. स्वामी समर्थ सांगतात की तुमच्या प्रार्थनेपेक्षा परमेश्वराची योजना मोठी असते. त्यामुळे धीर धरा आणि परमेश्वराच्या आशीर्वादाने वाटचाल करत राहा. स्वामी समर्थ भक्तीच्या मार्गावर चालणारा भक्त कधी एकटा नसतो, कारण त्याच्या मागे स्वामींची शक्ती असते.
मार्गदर्शन करणारे गुरु असतात आणि हृदयात स्वामींची भक्ती असते. स्वामी समर्थ सांगतात की तुमच्या हृदयातील प्रेम आणि श्रद्धा हीच खरी प्रार्थना आहे. त्यामुळे कोणत्याही कठीण प्रसंगी परमेश्वराचं स्मरण करा आणि पुढे चालत राहा. स्वामी भक्तांनो, जीवनात जे काही घडणार आहे ते सर्व काही तुमच्या कल्याणासाठीच घडणार आहे. त्यामुळे कुठल्याच गोष्टीचा संशय घेऊ नका. परमेश्वरावर निशंकपणे विश्वास ठेवा आणि परमेश्वराच्या मार्गदर्शनावर चालत राहा. आणि हा एक मंत्र संपूर्ण ऐका. नक्कीच तुमच्या जीवनामध्ये अकल्पनीय बदल घडू लागतील. मंत्र मोबाईलवर लावायचा आहे. डोळे घट्ट मिटून घ्यायचे आहेत. डोळ्यांसमोर स्वामींची मूर्ती आणायची आहे आणि स्वामींना प्रार्थना करायची आहे. हे स्वामी महाराजा, माझे हे संकट दूर कर, माझी ही इच्छा पूर्ण कर, माझे कुटुंब सुखासमाधानाने राहू देत. मंडळी, स्वामी हे भक्तवत्सल आहेत. ते भक्तांवर खूप प्रेम करतात. त्यांनी आपल्या भक्तांना बाळ मानलेले आहे आणि आई बाळाची इच्छा तर पूर्ण करणारच. त्यामुळे स्वामी तुम्हाला नक्कीच मदत करतील. मंडळी, एवढं सगळं करायला अर्धा मिनिट खूप झाला आणि एवढा वेळ तर तुमच्याकडे असेलच. बाकीचा सर्व व्हिडिओ तुम्ही मोबाईलवर सोडून द्या. तो त्याची पॉझिटिव्हिटी पसरवत राहील. तुम्ही दैनंदिनी कामं करता करता त्या मंत्राचे श्रवण करा आणि मनातल्या मनात जप देखील करा. फायदा नक्कीच होईल. ही डिजिटल सेवा आहे. आज या व्हिडिओच्या माध्यमातून स्वामींचे विचार तुमच्यापर्यंत पोहोचले आहेत. जर तुम्हाला मनापासून वाटत असेल की या विचारांनी तुमच्या मनाला उभारी दिली आहे, तुम्हाला जगण्याचे बळ दिले आहे, तर तुम्ही सुद्धा या ज्ञान यज्ञात आपली समिधा अर्पण करू शकता. पूर्वी लोक मंदिरात जाऊन दानपेटीमध्ये गुप्तदान करत असत, कारण गुप्तदानाचे फळ अनंत असते. आजच्या युगात व्हिडिओच्या खाली जे सुपर थँक्सचे बटन आहे ते एका डिजिटल दानपेटी सारखेच आहे. जर तुमची इच्छा असेल आणि तुमची परिस्थिती असेल तर यथाशक्ती, मग ती रक्कम कितीही छोटी असो वा मोठी, तुम्ही या सुपर थँक्सच्या माध्यमातून स्वामींच्या कार्यासाठी अर्पण करू शकता. हे पैसे कोणाच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी नाही, तर हे विचार, ही सकारात्मक ऊर्जा अशाच लाखो दुःखी लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी वापरली जातील. लक्षात ठेवा, सक्ती नाही तर भक्ती महत्वाची आहे. ज्याला वाटतं की स्वामींनी मला मार्ग दाखवला म्हणून कृतज्ञता म्हणून मी हे फुल ना फुलाची पाकळी अर्पण करतो, त्यांनीच या बटनावर क्लिक करून आपले योगदान द्यावे. तुमची ही छोटीशी मदत कोणाचे तरी आयुष्य बदलणाऱ्या व्हिडिओच्या निर्मितीसाठी मोलाचे ठरेल. तसेच या व्हिडिओला लाईक करणे म्हणजे केवळ एक बटन दाबणे नव्हे, तर या सकारात्मक ऊर्जेला दुजोरा देणे आहे. जेव्हा तुम्ही लाईक करता तेव्हा तुमची विश्वाला सांगता की हो, माझा स्वामींवर विश्वास आहे. आणि शेअर करणे म्हणजे काय, तर पुण्य वाढणे. जर तुम्हाला वाटत असेल की तुमच्या एखाद्या मित्राला, नातेवाईकाला किंवा ओळखीच्या व्यक्तीला सध्या आधाराची गरज आहे, तर त्यांना हा व्हिडिओ नक्की पाठवा. कदाचित तुमचे एक शेअर करण्याचे कर्म त्यांना आत्महत्येसारख्या विचारांपासून परावृत्त करू शकेल किंवा त्यांना नैराश्यातून बाहेर काढेल. पुण्य फक्त अन्नदानानेच नाही तर विचारदानाने सुद्धा मिळते. म्हणून संकोच न करता हा व्हिडिओ तुमच्या जवळच्या लोकांपर्यंत पोहोचवावा. आणि हो, स्वामींच्या या दरबारात रोज हजेरी लावण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनचे बटन देखील प्रेस करा. जेव्हा स्वामींचा संदेश येईल तेव्हा सर्वात आधी तो तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. ही घंटा म्हणजे मंदिराची घंटा आहे, जी वाजवल्याने मनाला जाग येते. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तुमचा संवाद. खाली कमेंट बॉक्समध्ये तुमचा अनुभव नक्की मांडा. तुमच्या मनात काय चाललं आहे, तुम्हाला स्वामींची प्रचिती कधी आली आहे, कशी आली आहे ते लिहा. जेव्हा तुम्ही श्री स्वामी समर्थ किंवा भिवू नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे असं लिहून कमेंट करता, तेव्हा ते केवळ शब्द नसतात, तर ती लिखित जप असतो. तुमच्या त्या कमेंटकडे पाहून दुसऱ्या एखाद्या भक्ताला प्रेरणा मिळू शकते. तुमची एक कमेंट हजारो लोकांचा विश्वास वाढवू शकते. त्यामुळे लाजू नका, मोकळ्या मनाने व्यक्त व्हा. इथे कोणी कोणाला जज करत नाही. आपण सर्वजण त्या एकाच माऊलीचे लेकरे आहोत. तुमचा हा प्रतिसादच या कार्याला पुढे नेण्याची प्रेरणा देतो. तर पाहूया तो शक्तिशाली रहस्यमय मंत्र काय आहे. तो मंत्र असा आहे.
ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। 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 ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः।
ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः।
ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः।
ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः।
ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः।
ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः. 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 ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः.
ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। 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 ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः।
ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः।
ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः।
ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः।
ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः. ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः. ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः. ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्था